no one country can make. So all countries got together. They decided, okay, we'll put in our expertise, our money, and build one. It was decided it will be done in Germany. Our scientists are now working in there to help them to make this accelerator. We're also contributing some money. Then they keep realizing that we really require younger generation to get into this. So they always emphasizing to younger generation, please, you have to really take sciences. So they decided to create a special center. It is called Inter-University Accelerator Center. So this center in Delhi, it was first called Nuclear Science Center, but people were afraid of nuclear, so they changed its name, Inter-University Accelerator Center. It is creating different kinds of accelerators which can be used for nuclear physics, atomic physics, material science, doing some applied work, bioscience, all kinds of things. And then 80 universities, they're utilizing these facilities for different kinds of work. So this is done, financed by University Grants Commission, funded by DST. But we also realize that our atomic energy establishment has lots of scientists, lots of wonderful things are being done there. There are facilities in Bombay, in Indore, and there are several of them. Then they decided to create another establishment. It is called Inter-University Consortium for DAE Facilities. So again, University Grants Commission is funding this. Students can go utilize the facilities in these places. And these are all problems that really focus on well-defined objects. Nuclear reactors, what kind of wonderful things it can do? Let me just give an idea. Because what I would like to say is that when you are graduating out, you should realize that right now what is happening, that there are no physics lab, chemistry lab, this lab. Actually, there is a collaboration of all kinds. If you want to focus your attention on any one project, you will require collaboration of various different fields. Let me give you an example of just a transistor. Transistor was discovered in 1947. The scientists who discovered, let's say you take a silicon crystal, you put one particular atom at one particular place, and look, you'll make this transistor. 1947 it was discovered. Just people did not know how to do that. Then these nuclear accelerator people got busy. In 1951, they showed a small nuclear accelerator can accelerate the particle you want to put it at the right place on the silicon crystal. It can be done. And first transistor was made. And then transistor was being used for making circuits. Industry started using it. But industry will not come near it. Why? Accelerator costs such a lot of money. How much a transistor costs? $4. $4. Then again the scientists and the accelerator scientists, they took this as a challenge. They started actually making particles better and better focused. And they said, one silicon crystal I can make 10 transistors. It became cheaper. This they went on and on and on. Development came to such a stage that they can focus the beam to nanometer dimension. And 1 inch diameter crystal they can make 100,000 transistors. And they found, if you now calculate, one transistor which used to cost $4, now it costs $4 nanodollars. So the way things develop now, another area, as I said, engineering the properties of material, that is a big thing requires. People are afraid, if you have a nuclear particle, it is going to really damage your thing. In fact, gradually, besides nuclear physics and materials, many other discipline people started using it. Like material science people, they started using how one can modify the property of material with these. So they say that when you hit a material with some particle,
its properties are modified. If you can study what kind of a modifications are taking place, a new discipline emerged, that I can engineer the property of material by using the nuclear accelerators. And one graduate student in a university, somebody said that, well, if you can make a smart material, then I can say your ions can do something. What is a smart material? Take a glass. In my window, both light and heat comes. I only want light, I don't want my heat. In fact, those people did some experiment that they showed. Some amount of material that this property can be fabricated, they're shown. But actually to make it into glass form takes a lot of time. But it has been shown this can be done. A smart material. And this really raised such hopes in all the accelerator users for materials engineering. Then one smart person said, come on, I don't want smart material. In winter, I want both light and heat. Can you make an intelligent material? Somebody say, I can make an intelligent material. In fact, a scientist can always come up with such a thing. It's a function of temperature, at one particular temperature, it will change its property. Intelligent material also made. This goes on and on and on. My time is up. As I said, this is time can go on and on and on. But let me just say one thing which is very, very important. Right now, in fact, lots of talents in our country, they can make this. They can, in fact, help the industry to make it. One area, radiation therapy. They have made actually some accelerators which can actually cure cancer through radiation. Our country has the potential, has the talent to help the industry make such accelerators. There are many hospitals in India now are importing these accelerators to do this radiation therapy. But we are not making it. But right now, there's so many different directions. For example, one project which is being done by Indians here is all this kind of dirty water which goes into the drains. One can irradiate with electrons now to remove all those things. Pure water will come in. So what one can do in all these kind of things, the sky is the limit. Radiation therapy, of course, people are afraid. But one direction in which one Indian is doing experiment now is, to suppose I make a very small diameter crystal, put my medicine in that, and make it into a magnet, a nano magnet. And then put the medicine in there, patient eats it. If the problem is here, take a magnet, take that nano crystal over there, and then that nano crystal actually, its outer surface is such that with some particular wavelength of light it will melt. One can do this. All these actual experiments have been done, and Indians are involved. I'm only quoting those, whether it is done here or abroad. So what I'm saying, I would like to make a special request to all the students here. Right now, no matter which direction you're going, even if you're not in the science thing, but if you look at this, you start interacting with people, you'll get interested, you can do wonderful things. The new sky is open now. Plan your things and have certain aim, and if you keep on focused on that, wonderful things can happen in your life. Once again, I would like to congratulate all the students and the rest of them. Thank you, Professor Mehta, for this valuable information. Thank you. Dignitaries who could not make it to the convocation ceremony have sent their messages and good wishes to the Wadis. Our first message this afternoon is from Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee. The President of India, Shri Pranab Mukherjee, is happy to know that ITM University Gwalior is holding its first convocation on October 8, 2016, and bringing out a souvenir cum convocation book to commemorate the occasion.
The President extends his warm greetings and felicitations to the faculty, staff, and the graduating students of the college, and sends his best wishes for their future endeavors. Our second message this afternoon is from Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Om Prakash Kohli. ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर अपना प्रथम दीक्षांत समारोह 8 अक्टूबर 2016 को मना रहा है। मेरे मन में इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने की प्रबल इच्छा थी, किंतु पहले से तय कार्यक्रम के कारण मैं दीक्षांत समारोह में उपस्थित नहीं रह सकूंगा। इस अवसर पर मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। कम समय में ITM विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय स्थान बनाया है। विश्वविद्यालयों और उनसे संचालित कॉलेजों में इस युवा पीढ़ी का निर्माण हो रहा है, जिसके कंधे पर देश के विकास की जिम्मेदारी आने वाली है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वह विकास और टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना है तो हमारे युवा छात्रों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना होगा। लेकिन दूसरी ओर उतना ही महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमारे छात्र अपनी समृद्ध परंपराओं से भी जुड़े। भारत समृद्ध विरासत वाला देश है। इसकी विरासत अध्यात्म और धर्म की नींव पर टिकी हुई है। आधुनिकता के फेर में अपनी परंपरा और विरासत को भूल जाना उचित नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे विश्वविद्यालय छात्रों को परंपरा और आधुनिकता दोनों से जोड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर अपने उक्त दायित्व के प्रति सजग है और वह ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करने के काम में लगा है जो राष्ट्र के सामने उपस्थित चुनौतियों का समाधान ढूंढने में सक्षम होगी। दीक्षांत समारोह के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। Next, we have a message from Honorable Governor of Haryana, Shri Kaptan Singh Solanki. ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर के दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इन विद्यार्थियों को ऊंचाई पर पहुंचाया है। वर्ष 2011 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने 5 साल की अल्पावधि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन की जो मंजिलें तय की हैं बहुत सराहनीय है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से ग्वालियर को भी ख्याति मिली है, उसका नाम रोशन हुआ है। ये सब करने में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। मुझे गर्व है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके निकले विद्यार्थी बड़ी बड़ी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, शिक्षा आज लगभग हर क्षेत्र में ऊंचे पदों पर विराजमान है। वे देश के सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। दीक्षांत का अवसर हम सबके लिए स्मरणीय दिन होता है, जब आप एक पड़ाव पार करके दूसरे पड़ाव पर जा रहे हैं और हम सब बड़ी आशा भरी निगाहों से आप सबकी तरफ देख रहे हैं। आप अपना अगला जीवन कैसे बिताएंगे, आप कैसे आगे जाएंगे। विश्वविद्यालय के लिए भी यह बहुत सुंदर और सुनहरा अवसर होता है जो दीक्षांत समारोह में आपको उपाधि देते हैं, साथ साथ आशीर्वाद भी देते हैं। इस आयोजन का इतना सुंदर निर्धार होने के कारण यह अपने आप में गंभीर और प्रेरणादायी बन जाता है। एक दूसरी बात और भी है, आज जो विद्यार्थी विभिन्न उपाधियों से विभूषित हो रहे हैं, उन चंद युवाओं में से
जिन्हें उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। अपने देश में कितने लोग हैं जो इस स्तर तक आ पाते हैं, जिनको ये डिग्री प्राप्त हो पाती है। अपने यहाँ सिर्फ 10% लोग ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। इस तरह अपने देश के जो 10% हैं उसमें से आप एक हैं, तो सोचो कितनी अपेक्षाएं आपसे देश को। उच्च शिक्षा में हमारी तो ये 10% है, लेकिन अमेरिका का प्रतिशत क्या है? अमेरिका का प्रतिशत 83 है। मैं नहीं सोचता कि शिक्षा के बिना कोई व्यक्ति देश के लिए उपयोगी हो सकता है। राष्ट्र का स्वाभिमान उसके मन में जाग सकता है और वह नैतिक हो सकता है कि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति बन सकता है बिना शिक्षा के। उच्चतर शिक्षा के साथ ही देश में तकनीकी शिक्षा की हालत का भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि आज जिन विद्यार्थियों को उपाधि दी जा रही है उनमें से अधिकतर तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थी हैं। आज का भारत उन चुनिंदा भाग्यशाली देशों में से एक है जिसकी 70% आबादी युवा है। सन 2025 तक देश की 3/4 आबादी काम करने की आयु के अंतर्गत होगी। इतनी ज़्यादा युवा शक्ति जो राष्ट्र के पास हो वह विकास की चरम सीमा को आसानी से पा सकता है, लेकिन इसके लिए हर युवा का तकनीकी रूप से दक्ष होना जरूरी है। एक बात और कहना चाहूँगा कि आज से आप बाहरी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। आपकी प्रतिभा देश में नहीं विदेशों में भी आपको स्थापित करेगी, लेकिन आप कहीं भी जाएं भारत को भारतीय होने के स्वाभिमान को मत भूलिएगा। इसके लिए स्वामी विवेकानंद को याद रखना जरूरी है कि 1893 से लेकर 1897 तक कई देशों में घूमे। उसके बाद समुद्र के रास्ते से आकर रामेश्वर में उतरे। सबसे पहले भारत माँ की मिट्टी में लोटपोट हो गए और मिट्टी से माथे पर तिलक किया और उन्होंने भारत माँ से कहा तो विदेश की भूमि पर घूमने के बाद अगर मैं कुछ भूला हूँ, अगर विस्मरण हुआ है, कहीं गलत रास्ते पर गया हूँ, तो गलत विचार अगर मेरे मन में आया हो तो मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं सब भूल जाऊँ। यह वही भाव है, यह देश का स्वाभिमान है, इसको कभी मत भूलना। अगर आप इसको नहीं भूलोगे तो कहीं पर भी आप जाओगे आपके मन में कभी छोटापन नहीं आएगा, कभी संकीर्णता नहीं आएगी, कभी हीन भाव नहीं आएगा। आपका चेहरा हमेशा उससे चमचमाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि भारतवर्ष को जाने, जो भारत को जान लेता है पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाता है। आखिर स्वामी विवेकानंद जी 1893 में अमेरिका में जाकर क्यों विश्व विजेता हुए? क्योंकि उन्होंने वेदांत का डंका बजा दिया। क्यों वहाँ सब लोग शरणागत हो गए? उनके पूरे भाषण में पिंड ऑफ साइलेंस था। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भारत को जानते थे। स्वामी विवेकानंद में भारत पूरी तरह से भरा हुआ था कि भारत के वो स्रोत थे, सराबोर थे। इसलिए गुलाम देश होने के पश्चात भी पूरे विश्व को हरा कर आए। ये भारत को जाना बहुत जरूरी है। एक बात का और ध्यान रखें कि आपको पढ़ा लिखा कर आज की स्थिति में लाने के लिए परिवार, समाज और देश का कितना योगदान रहा। आप में से कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके परिवार गरीब होंगे, साधन संपन्न नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सब चीज़ों में कटौती करके उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, और जब पढ़ाया होगा तो आपसे कुछ अपेक्षा नीति हो। हर परिवार की अपनी एक शान होती है, अपनी एक पहचान होती है। आपको शान और पहचान को बढ़ाना, माता पिता की आपको यहाँ तक लाने की जो इच्छाएँ हैं उन सबकी पूर्ति करना आप सबका कर्तव्य नहीं, बल्कि यह आपका ऋण है, जिसे चुकाने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना होगा। इसलिए हमें योग्य बनाने में परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारा जो ऋण बनता है वह चुकाना हमारा कर्तव्य होगा। दीक्षांत समारोह में जो आपको उपाधि दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, जो दक्षिणा भी मांग रहे हैं, कि कभी अपने जीवन के अंदर ऐसी स्थिति मत आने देना जिसके कारण हमारे परिवार की, माता पिता की, राष्ट्र की, देश की, समाज की और उस यूनिवर्सिटी की शान कहीं पर भी कम हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद और Our next message is from Shri Nitin Gadkari, Minister for Road, Transport, Highways and Shipping. मित्रों, दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने की, पर अष्टमी का दिन होने के कारण मेरे घर में देवी का मंदिर है और पूजा करने के कारण मुझे घर से बाहर में निकल नहीं सकता, इसलिए आपके कार्यक्रम में मैं नहीं आ सका। इसका मुझे बहुत दुख है। मैं मानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में आने वाले समय में शिक्षा संस्थान का
और शिक्षा संस्थान में जो शिक्षा उपलब्ध होगी उससे ही देश के भविष्य की पीढ़ी का निर्माण होने वाला है। आपकी संस्था के बारे में मुझे खुशी हुई कि जो रैंकिंग मिला है भारत सरकार की ओर से, उसमें बहुत अच्छी तरह का रैंकिंग भी इस संस्था को मिला है, जबकि इसकी स्थापना केवल 2011 में की है। इतना ही नहीं तो मध्य प्रदेश में भी अव्वल संस्था में इस संस्था का नाम है। तो बहुत खुशी की बात है। आज हमारे देश का कभी कभी वर्णन किया जाता है कि जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ विद्यार्थी नहीं है, और जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। और मुझे विश्वास है कि आपकी संस्था की जो जानकारी मुझे मिली, इसमें अच्छे टीचर भी है, अच्छी बिल्डिंग भी है, अच्छी पढ़ाई भी है और अच्छे विद्यार्थी भी है। और मैं ये मानता हूँ कि आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ये देश का भविष्य है। हम नॉलेज को कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे देश का भविष्य है। मैं अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में जाकर आया और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि जो भारतीय इंजीनियर मुझे हर जगह मिलते थे वो कोई मुझे यही कहता था ये मेरा पेटेंट है, ये मेरी रिसर्च का है। रिसर्च से ही देश का भविष्य है। आने वाले समय में आपको जो सुविधाएं उपलब्ध हुई है और जो मार्गदर्शन अच्छे टीचर से आपको सबको मिल रहा है और जो पढ़ी आप स्वीकार कर रहे हैं,